Hello, guys. I'm sure you know me as srpay, but this is a different channel. लास्ट वीक मैंने srpay पे लाइव स्ट्रीम करा था और मुझे ये आइडिया एक आदमी ने बताया उसमें कि आप हॉरर स्टोरीज़ क्यों नहीं सुनाते हो. एंड मैंने सोचा व्हाई डोंट आई एक्चुअली डू इट क्योंकि मैं सोच रहा था इस बारे में बहुत टाइम से. नॉट स्पेसिफिक टू हॉरर स्टोरीज़, बट मैं ये सोच रहा था कि मैं एक ऐसा चैनल बना सकता हूँ जिसे लोग बस बैकग्राउंड नॉइज जैसे यूज़ करें, या फिर अगर तुम्हें कभी लंबी कहानी सुननी हो तो तुम इस चैनल को या फिर मेरे इन वीडियोस को ऐसे सुन सकते हो. विच ऑल्सो मीन्स कि इसमें बहुत ज़्यादा कम एडिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा कम रीटेक्स होंगे, एंड यू कैन सी माई मिस्टेक्स कि मैं कैसी मिस्टेक करता हूँ कुछ भी बोलते हुए. बट एज अ बैकग्राउंड नॉइज चैनल आई थिंक दिस कैन वर्क. या सो मेन चीज़ ये थी कि मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा था किस चीज़ के बारे में बात करने के लिए. लाइक स्टोरीज़ मैं बता सकता हूँ, बट देन कितनी स्टोरीज मैं बता लूँगा, राइट? सो दिस इज़ माई फोर्टे नाउ आई थिंक, क्योंकि मैं हॉरर स्टोरीज सुना सकता हूँ, राइट? एंड इवन इन दैट थिंग आई एम थिंकिंग कि क्योंकि हम सभी के पास ऐसा एक्सपीरियंस होता है एक ना एक कि जिसमें हम अपने दोस्तों को अपनी हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, या फिर जो हमारे साथ कभी हॉरर चीज़ें हुई हो वो हम अपने बाकी लोगों को सुनाते हैं. सो व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल टेक योर गाइज इज़ हॉरर स्टोरीज. अगली बार से आई विल लीव क्या बोलते हैं उसे, आई विल लीव ईमेल इन माय डिस्क्रिप्शन. तो आप उसमें मुझे अपनी हॉरर स्टोरी बता सकते हैं. अगर डिटेल में होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी होगी डिटेल में तब भी आप मुझे भेज सकते हैं. बट प्लीज़ ऐसी हॉरर स्टोरीज भेजना जो तुम्हारे साथ सच में हुई हो. आई डोंट वांट कि तुम मेड अप चीज़ें मुझे भेज दो, क्योंकि मेड अप चीज़ें मैं इंटरनेट से भी ले सकता हूँ. सो या देयर विल बी ईमेल इन माय डिस्क्रिप्शन अगर आपको अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे आवाज़ में सुननी है. एंड इफ़ यू वांट टू सी योर हॉरर स्टोरीज ऑन माय चैनल देन प्लीज़ सेंड देम टू मी. डिस्क्रिप्टिव अगर होंगी लाइक नाम एज जगह के साथ तो इट विल बी रियली गुड. नहीं तो वैसे भी चलेगा, कोई बात नहीं. मुझे पता है मेरी ऑडियंस ज़्यादा पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल की है. सो मैं ट्राई करूँगा हॉरर स्टोरीज़ हिंदी में सुनाने का, पर आज की हॉरर स्टोरी इंग्लिश में है. कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वाली हिंदी से पढ़ेंगे. लेकिन आज की जो हॉरर स्टोरी है वो है पूजा के बारे में. I'm going to be reading the story from Notepad. So yeah, let's begin. Pooja, a 22-year-old girl, moved to Delhi for college and rented a flat in a quiet residential area. Despite being a big city, her flat was surrounded by tall trees and had a serene atmosphere. Pooja was excited to start a new phase of her life, but little did she know that her life was about to take a dark turn. The first horror incident occurred on a night when Pooja was fast asleep. She was abruptly awakened by a noise coming from outside her window. When she looked outside, she saw a ghostly figure walking in the moonlight. Pooja ने सुना के बाद सीधा सा एक भूत देखा. That is not possible, right? Pooja screamed in terror and hid under the covers, not daring to come out. The next morning, she told her neighbors about the incident, but they laughed it off. Exactly. रात में उसने भूत देखा, कौन नहीं हंसेगा? Saying it was probably just a stray dog. It was probably just a stray that does not make any sense. Stray dog? हवा में कैसे उड़ सकता है, right? However, Pooja was convinced that it was a ghost and was terrified every night. The second horror incident took place a few weeks later. Pooja was returning home from college and she entered her flat. She saw that all her furniture had been rearranged. The chairs were upside down, the curtains were on the floor, and the drawers were all open. Pooja was scared and immediately called the police. When they arrived, they found no signs of forced entry, and the culprit was never found. Pooja started to feel that someone was watching her, and she was always looking over her shoulder. Okay, so far मुझे ये लगता है फर्स्ट इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ था, उसको देख के तो मुझे ये लगता है कि शी सॉ मे बी समथिंग, एन आउल और समथिंग. बट सेकेंड वाला इज़ काइंड ऑफ वेरी स्पेसिफिक, राइट? ऑल्सो आई डोंट नो कि मैंने कितने बार ये सुना है कि दिल्ली में किसी ने भूत देखा है. सो या आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड ओवर हियर. ठीक है, रीअरेंजिंग योर थिंग्स. एक भूत बस आके ऐसी चीज़ क्यों करेगा? बट ओके, ठीक है, मे बी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसने एक नया फ्लैट लिया था दिल्ली में, मे बी उस फ्लैट में कुछ हो, क्या पता कोई मरा हो, या फिर प्रॉब्ली कोई मरा होगा उस फ्लैट में. दैट्स व्हाट आई थिंक एज ऑफ नाउ, बट लेट्स सी.
The third horror incident occurred a few days later. Pooja was in her flat when she heard a strange knocking at the door. When she opened it, there was no one there. But as she closed the door, she heard a voice whisper, I am coming for you. Oh my God. Okay, even I'm scared from my own voice. What the hell? Okay. See, सारी की सारी चीज़ें बस फ्लैट के अंदर ही हो रही है. So I think it's not like somebody is haunting her. I think the flat is haunted. That's what I feel अभी तक. ठीक है. Pooja was terrified and did not leave her flat for days. One day, Pooja decided to gather the courage to find out who was behind the strange incidents. She started to investigate and found out that the flat she was living in was once occupied by a young woman who had been murdered by her husband. Oh my God. The husband was never caught, and the ghost of the young woman was set to haunt the flat. But why is she haunting Pooja? I don't get that thing. Pooja was shocked and scared, but she also felt a sense of compassion for the young woman's soul. She decided to hold a Pooja in the flat. Yeah. It's not that kind of Pooja. Her name is not Pooja. उसने उस औरत के लिए एक पूजा करने की सोची. To help the young woman find peace. On the day of Pooja, Pooja lit incense and candles and recited prayers. Suddenly, ghost appeared before her. That is... Okay. I know this is a ghost story and I know a lot of people have seen bhoot, but ghost appearing in front of you, I just don't believe that thing, you know. As a horror storyteller from now on, I think I need to start believing in ghosts. But that's just who I am, you know. And Pooja realized that the ghost was not there to harm her, but was seeking her help. The young woman's husband was still alive. Oh my God, okay. The young woman's husband was still alive and was still terrorizing the neighborhood. Okay. With the help of young woman's ghost, Pooja was able to track down the husband. Dude, this is like a true crime incident. Okay, track down the husband and turn him into the police. The young woman's soul finally found peace, and strange incidents in that flat stopped. Pooja was no longer afraid and was able to live in peace. The twist at the end was that the husband was actually a serial killer and had murdered several other women in the neighborhood. Oh my God. The young woman's ghost had been guiding Pooja to stop the husband and bring justice to other women. Pooja learned that the past should never be taken lightly and that sometimes the dead need their help. She was grateful for the young woman's ghost for helping her and felt a sense of fulfillment for being able to bring closure to the case. From that day on, Pooja lived her life with a newfound respect for the dead and deeper understanding of the world beyond her. ठीक है, मुझे ये नहीं पता है कि भूत किसी और के सामने कितने बार आया है, पर मैंने ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक फ्लैट हॉन्टेड रहता है, ठीक है, एक ज़मीन हॉन्टेड रहती है, एक पूरा का पूरा घर हॉन्टेड रहता है. सो दैट पार्ट आई कैन काइंड ऑफ बिलीव. This was my first story on this channel, guys, and I really need your feedback, okay? Don't be shy. Let me know what I can improve on, because I have never narrated a story like this. I still want to keep it like editing free, because I don't want to add ऐसे ghost वाली noise and then metal वाली noise, क्योंकि you guys are not idiot, है ना? The audience are not bunch of idiots. You don't need these horror sound. You just need a good story, and I feel like a good narrator. So मैं बिल्कुल editing नहीं करूँगा उसमें, मैं तुम्हें simple way में एक story सुनाऊँगा, ठीक है? And hopefully you guys will send me your stories. Yeah, subscribe to this channel. Hopefully I will make more videos like this. This is to keep you company at night, I think so. Thank you so much again, and I will see you again very, very soon. Bye bye.